Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of University of Education, I welcome you once again in lecture number 8 of Computer Communication and Network. Dear students, hope you have understood the concept of the previous lecture, lecture number 7. In the previous lecture, we have studied that what is a data and signal. Students, data can be of digital and it can be of analog. Same, the signals can be of analog and it can be of a digital. After that, we have seen that what is a periodic signal and what is a non-periodic signal. We have also studied that what is the simple signal and the composite signal. Students, today's lecture is the continuation of the previous lecture. So let's start our today's lecture. In today's lecture, we will see that what is the bandwidth, what are the transmission impairments, and what is the channel capacity. Students, let's move on to our today's lecture. Students, whenever we will talk about the signals, whenever we will talk about the mode of the transmission, there we should have to know the concept of a bandwidth. That what is a bandwidth? Bandwidth is also called the frequency of spectrum. Bandwidth को हम frequency of spectrum भी बोल सकते हैं. As you can see on the screen that these are the frequency of spectrum. So a signal, it is a signal, it is a collection of all the component frequencies which they are contained. So it is shown using a frequency domain graph. Bandwidth क्या होती है? It is of a signal, it is the width of the frequency spectrum, and in other words, we can say that bandwidth refers to the range of components frequencies and frequency spectrum refers to the element within the range. Students, here on the screen that you can see that there are two different calculation of the bandwidths, that one is the bandwidth of a periodic signal and another one is the bandwidth of a non-periodic signal. We have also studied that bandwidth is normally a difference between the two numbers. And what are they two numbers? Bandwidth is equals to frequency highest माइनस फ्रीक्वेंसी लोएस्ट, यानी कि जो रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, टू नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट आवर बैंडविड्थ व्हिच इज कैलकुलेटेड इन द हर्ट्ज. Here you can see the bandwidth of a non-periodic signal. There is in the bandwidth of the non-periodic signal, there is there is a span on which we can see that what is the bandwidth. It is if the highest frequency is 500 and lowest frequency is 1000, then it is called the 4000. Students, why we are showing the bandwidth for non-periodic signal is like this, that we don't know that what is the exact pattern of the bandwidth. Next, we will see the example. Here, if a periodic signal is decomposed into 5 sine waves with the frequency 100, 300, 500, 700 and 900 Hertz, what is the bandwidth? We should have to calculate the bandwidth, and as I have already told that the formula of the bandwidth is equals to frequency highest minus frequency lowest. Students, they are also asked for the to draw the spectrum, and assuming all the components have the maximum amplitude of the 10 volt. Here the let frequency highest be the 900 and the frequency lowest it will be the 100. Then what is the bandwidth? So bandwidth will be the 900 minus 100, that is the 800 hertz. How can we draw the spectrum? We have 1, 2, 3, 4, 5 spikes, and they are of 100, 300, 500 and 700 and 900 hertz, and it is also given that what is the maximum amplitude, that is 10. So it is the 10 amplitude on which we have to draw the spectrum for 100, 300, 500, 700 and 900 uh, hertz. So as I have already told you that bandwidth is the
bandwidth इसकी क्या होगी, which is 900 minus 100, and that is 800 hertz. And the next one is is an example of a non-periodic composite signal, and it has a bandwidth of 200 hertz. Here in this question, what is given, that is the bandwidth, and what is the formula of bandwidth? That is equals to highest frequency minus lowest frequency. So what we have to do here, that they have told us that the middle frequency is 140 kilohertz and peak amplitude is a 20 volt. Two extreme frequencies have an amplitude of 0. So these are our two extreme frequencies, and this one our peak amplitude. And what is our peak amplitude? That is equals to 20 volts. So the two extreme frequencies have an amplitude of 0. So we should have to draw the frequency domain. Students, here the bandwidth is given, which is equals to bandwidth is equals to 200. It means and what is the peak or middle frequency, highest frequency, that is 140. So we can say that bandwidth is equals to 240 minus 40, that is equals to bandwidth is equals to 200 bandwidth. So as it is a non-periodic composite signal, so we cannot draw the spectrum for each and every value. Students, in digital signal, if a signal has L levels, each level needs log base 2 L bits. Digital signal has 8 levels. Which kind of these 8 levels? We can see that if we will write a digital signal deals with zeros and ones, and if we will write 2 raised to power 3, that is equals to 8 levels. So how many, what kind of these levels? It is like a 000, 001, and up to 111. So a digital signal has 8 levels. So how many bits are needed per level? How can we calculate? There is a formula for the number of bits per level to calculate the number of bits per levels, and the formula is log base 2 and L. So how can we get the value of L? We can get the value of L from here. A digital signal has 9, and now a number of bits per level is equals to log base to 8, which is equals to 3 bits. Students, if what is how can we detect this 3 bits? Actually, log base to 8 means this is the power of 8. Like if we have 2 if we are having 2 of 3 times, then what is the answer? That is 8. It means 2 raised to power 3 is equals to 8, and the answer will be 3. Digital signal has 9 levels. How many bits are needed per level? Now the L is 9 over here, and the answer is 3.17 bits. Students, we can have levels. How can we calculate the number of bits per levels? For 9, if we have 3 bits, then how can we accommodate 0.17 bits? So it is not realistic. We need 4 bits over here. Definitely the remaining will be wasted, but for 9 levels we need 4 bits, and that will be like this: 0 0 0 0, then 0 0 0 1 up to 1 1 1 1. Students, the next important, very important topic, that is a bit rate. The concept which is used in to describe the digital signal, in which the bit rate is a very much important. Instead of frequency, it is the number of bits sent in 1 second. एक सेकंड में जितने number of bits जो हैं वो sender receiver को भेजेगा, that is called a bit rate. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारा क्या होगा बिट रेट ऑफ द चैनल इफ वी नीड टू डाउनलोड द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर सेकेंड. अब जब हमें 100 पेजेस पर सेकेंड पे कोई डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना होगा, तो डेफिनेटली वी शुड हैव टू नो कि अगर हमारे पास एक पेज है तो उस पेज की सारी जितनी उसकी उस पेज में टोटल लाइंस कितनी होंगी, और उन टोटल लाइंस के अंदर उसके पास कितने जो है वो कैरेक्टर्स होंगे पर लाइन, और फिर एक कैरेक्टर के अंदर कितनी बिट्स होंगी, दैट वी शुड हैव टू नो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
So for this, how can we calculate? There are 100 pages. In one page, पर पेज जो है वो 24 लाइंस होती हैं और उसमें टोटल 80 करेक्टर्स होते हैं और हर करेक्टर जो है वो 8 बिट्स का होगा. इट मीन्स द आंसर इज 1.53 मेगाबिट्स पर सेकेंड. What is the bit rate of for high definition TV that uses digital signals to broadcast high quality video signal? So students, there are 19 multiplied by 180 pixels per screen मौजूद होते हैं और इसमें जो आपकी स्क्रीन है वो 30 टाइम्स पर सेकेंड में दोबारा से वो फ्लक्चुएशन करके रिन्यू होती है. और वो 24 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक कलर पिक्सल को. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द बिट रेट ओवर हेयर? हमें यहाँ पे बिट रेट कैसे आइडेंटिफाई करना है? 1920 मल्टीप्लाइड बाई 1080 ये वाला. उसके बाद कितने टाइम्स जो है वो स्क्रीन एक सेकेंड के अंदर रिन्यू होती है, दैट इज 30 एंड 24 बिट्स रिप्रेजेंट्स वन. और एक कलर पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 24 बिट्स. सो विच इज इक्वल्स टू 14929923000 which is approximately equals to 1.5 gigabits. Next one is a bit length. It is similar to a wavelength, as we have studied in our previous lecture that there is a T wave, another T wave. So what is the difference over here? That is called the wavelength. यहाँ पे अभी हम पढ़ चुके हैं कि एक डिस्टेंस 1 बिट ऑक्युपाइड ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम, उसको हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करने से प्रोपोगेशन स्पीड में with bits duration. So उसके लिए we should have to know that what is a bit length, which is equals to propagation speed multiplied by bit duration. So bit duration क्या कहलाएगी? It is the time one bit occupies on the medium. ठीक हो गया. So bit duration क्या कहलाएगा? Is the time one bit occupies on the medium. Students, before moving towards our next topics, the first most important topic is the transmission impairment. What is meant by a transmission impairment? That is, the next topic is a transmission impairments. Student, what is meant by a transmission impairment and why we need to study over here? Actually, we are talking about the signals. So, जब भी हम signal की बात करेंगे, उसमें we should have to know that what are the transmission impairment. Signals किस तरह carry करता है? Transmission medium. So, transmission medium के अंदर we should have to know that what are the impairments. Students, signals travel through the transmission medium and which are not perfect. So this imperfection causes the signal impairments. So the imperfection causes the signal impairment, and this means that the signal at the beginning of the medium was not same at the end of medium. जो signal हमने भेजा था at the start वो एंड पर हमें जो है वो रिसीव नहीं हुआ. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि what is sent in what is sent is not what is received. So there are three causes of impairment जो है वो exist करते हैं. They are called the attenuation, distortion and noise. The first one is attenuation, then distortion, and the third one is a noise. For analog signals, these impairments introduce various random modifications that degrade the signal qualities. But for digital signals, bit errors may be introduced by these three causes of impairment: attenuation, distortion, and noise. Students, let's start from the attenuation, the first transmission impairment, which is an attenuation. Attenuation से क्या मुराद है? It means loss of energy. क्या हो जाता है? सिग्नल वीक हो जाता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो फॉल डाउन हो जाती है किसके अगेंस्ट? दिस डिस्टेंस के साथ. सो व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, it loses some of its energy so that it can overcome the resistance of the medium. Thus, a wire carrying electrical signal gets warmed, if not hot, after a while. So, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? ये attenuation कहलाती है. So, some of the electrical energy is in signal is converted to the heat.
अब ये रोकने के लिए जो आपका सिग्नल जो है वो अटेनुएट कर जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी है, दैट इज द एम्पलीफायर्स। दे आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। सो अटेनुएशन क्या करता है, अटेनुएशन इंक्रीज कर देता है इसको विद फ्रीक्वेंसीज। स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी मेजर द अटेनुएशन? हम अटेनुएशन को कैसे मेजर करते हैं? हम कहते हैं कि अटेनुएशन जो है, जब सिग्नल ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर जाता है, और इस चीज को ओवरकम करने के लिए द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम जो है इज एनर्जी, loses energy overcoming the resistance of the medium. So to show the loss or gain of the energy, आपके पास जो यूनिट यूज होता है that is the decibel. It is used as a constant number per unit distance for the guided media. So wireless transmission जो है that is the more complex. Students, here on the screen you can see that this is our original data, this is our original data as well, but this is our attenuated data. Attenuated data जो है या attenuation जो है, इसको हम किस तरह से measure करते हैं? We will measure it through the dB. So जो dB क्या है? dB का, there is a formula for a dB. So before knowing this, that we should have to know there are 2 points. One is a point that is input signal, and there is a point 4 which is an output signal. So at some point आपका जो है वो सिग्नल की जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम पे वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द डेसिबल. सो जब हम जो सेंडिंग डाटा होता है, दैट शुड बी जस्ट सेम एज द रिसीविंग डाटा. सो उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर दैट वी हैव टू यूज एन एम्पलीफायर. एम्पलीफाई क्या करते हैं कि वो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं और उसको ओरिजिनल जो उसकी शेप है उसमें वापस ले आते हैं. So this is -3, and then 7 dB, then the -3, so so dB is equals to +1. Students, we have a formula to calculate the attenuation, that is 10 log base 10 P2 divided by P1. What is P2 and P1? P2 is an output and P is an input. So they are the powers at point 1 and 2. Suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduces to 1/2. This means आपका जो P2 होगा that will be equal to half of P1. In this case, the attenuation loss of power, we have to calculate that what is the loss. अगर आपकी value जो है that is in minus, then it means आपको क्या हो रहा है? Loss हो रहा है. And if your value of answer is in the plus, it means you are gaining. आपको जो है वो फायदा हो रहा है. Students, what is asking in this question is they are saying that suppose सिग्नल ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम और उसकी जो पावर है वो रिड्यूस होगी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल पावर. इसका मतलब कि यहाँ पे P2 इज इनपुट है और P2 हमारे पास आउटपुट है, और जो हमारी आउटपुट है वो क्या है? दैट इज हाफ ऑफ P1. सो इन दिस केस हमारी अटेनुएशन में लॉस ऑफ पावर क्या होगा? वी कैन बी सीन ओवर हेयर. 10 base 10 into log 10 base 10 P2 over P1, that is the formula for the attenuation. So here 10 log base 10, here what is P2? P2 is half of P1. We can write 0.5 P1 divided by P1, which is an input. So input point. So the answer is 10 log base 10.5 is equals to 10 into -3 is equals to 3 dB. So यहाँ पे हमारे पास आंसर क्योंकि माइनस में आया है, तो आंसर माइनस में आने का मतलब है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है. So loss of 3 dB is equivalent to losing 1/2 of the power. Students, next another example of an attenuation is suppose a signal travels through an amplifier and its power is increased 10 times. This means कि आपका जो P out है that is P2 out है that is 10P. In this case the amplification gain of power, and how it is calculated? 10 log base 10 is P2 divided by P1 is equals to 10 log base 10 and 10p. Why? Because P2 out is equals to 10p1 and divided by p1.
So how can we calculate the 10 log base 10 10 is equals to 10 multiplied by 1, which is equals to 10 dB. The next point is a distortion. Students, distortion क्या होता है? जब सिग्नल अपनी ओरिजिनल शेप को चेंज कर लेता है तो वो दैट एक्चुअली डिस्टॉर्शन कहलाता है. डिस्टॉर्शन occurs in a composite signal and made of different frequencies. So each frequency component has its own propagation speed which is traveling through a medium. So the different components therefore arrive with the different delays, and the receiver end पे क्या हो रहा होगा, that is delay distortion. This means that the signal have different phases at receiver than they had at the source due to difference in delay. So the shape of composite signal is not same all the times. Distortion is caused by the fact that velocity of propagation of signal through a medium varies with frequency. So velocity tends to be highest near the center frequency and to fall off towards the two edges of the bandwidth. Students, if we have seen in our previous lecture that this is an example of a composite signal. So हमने ये कहा था कि हमारे पास different frequency के जो हैं वो signals हैं और उसके accordingly जो है वो हमारे पास जो है वो जब हम उनको अलग करते हैं तो ये हमारे पास दे बिकेम अ सिंपल सिग्नल. यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं इन फेस, ये तीनों मिला के हमारे पास कंपोजिट सिग्नल बनाता है. सो ये दिस इज अ सेंडर साइड एंड दिस इज अ रिसीवर साइड. अब आप देखेंगे जो सेंडर ने डाटा भेजा था रिसीवर ने उस जैसा रिसीव नहीं किया हुआ. So velocity tends to be highest near the center frequency and to fall off towards the edge of the band. The third one is a noise. Noise क्या कहलाता है? Noise is any unwanted signal inserted somewhere. So between transmission, वो क्या करता है? वो degrade. Again, it degrades the signal quality. So it combines with the distorts. कोई शोर हो जाता है जो signal को intend करता है for transmission and reception. So noise is the major limiting factor in communication. There are different type of noise. कौन कौन सी है? थर्मल नॉइज है, इंड्यूस नॉइज है, क्रॉस टॉक है एंड इम्पल्स नॉइज. What are these kind of noises? Thermal is a random noise of electrons in the wire, creates an extra signal. और इसमें आपके पास जो है वो एक इंड्यूस नॉइज है. इंड्यूस नॉइज क्या होती है? दे आर फ्रॉम अ मोटर एंड अप्लायंसेस डिवाइसेस. दे एक्ट एज अ ट्रांसमीटर एंटीना एंड मीडियम एज रिसीविंग एंटीना. क्रॉस टॉक जो है वो सेम होती है जैसे बिटवीन टू वायर्स में के बीच में कोई शोर आ जाता है. और इम्पल्स नॉइज जो है दे आर स्पाइक्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम पावर लाइंस और लाइटनिंग के अंदर ये यूज होती है. सो यू शुड हैव टू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस, थर्मल नॉइज, इंड्यूस्ड नॉइज, crosstalk and impulse, and you should have to know that what is meant by them. Students, now you can see on the screen that this is a transmitted data. This was a transmitted data and it was a received data, and you can see that both data shapes are different. So why they are different? Because they are due to noise. Students, another very important topic is our channel capacity that we are going to start. So they are all interrelated with each other. So what is the channel capacity? Channel capacity is the maximum rate at which data can be transmitted over a given communication path or channel under the given condition. So maximum rate आपका क्या है? कहाँ पे सेंडर से रिसीवर तक पे एक कम्युनिकेशन पाथ को, इसको हम लिंक भी कहलाते हैं और इसको हम जो है वो चैनल भी कहलाते हैं. ठीक है, तो इन कौन कौन सी गिवन कंडीशंस के ऊपर जो है वो डाटा ट्रैवल कर रहा है और कितना उसका मैक्सिमम रेट है. So actually we should have to know that what is the relationship between the data rate and the bandwidth. हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बहुत शुरू में बात की थी. वो क्या होता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट सिग्नल कंटेन्स. सो बैंडविड्थ क्या है? डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज दैट अ चैनल कैन हैंडल, एंड it is measured in hertz. So it dictates the information carrying capacity of the channel in the bits per second, which is calculated using the bandwidth.
सो डाटा रेट और बिट रेट क्या होता है कि हाउ इंफॉर्मेशन द सिस्टम कैन हैंडल एट गिवन टाइम और इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिग्नल which is measured in bits per second. So this is called a bit rate. डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड बैंडविड्थ जो होगा, यानी कि जितनी वो कैसा होगा कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जितनी ज़्यादा हमारे इंटरनेट की बैंडविड्थ अच्छी होती है उतना ज़्यादा हमारा डाटा अपलोड और डाउनलोड जो है वो तेज़ स्पीड से होता है। स्टूडेंट्स, चैनल क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन पाथ डेडिकेटेड टू अ पेयर ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अगेन एक लिंक, अगर इफ वी हैव टू पॉइंट्स और उन पॉइंट्स के दरमियान में अगर हम एक लिंक क्रिएट कराते हैं तो वो लिंक क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स बैंडविड्थ। सो इट इज अ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। अगेन ये वायर भी हो सकती है और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम सच एज द रेडियो चैनल्स। सो चैनल और ट्रांसमिशन मीडियम अगेन ये सिंप्लेक्स भी हो सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकते हैं और फुल डुप्लेक्स भी हो सकते हैं। और ये तीनों किस तरह के जो हैं वो चैनल्स हैं, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। सो चैनल क्यों यूज किया जाता है? चैनल यूज किया जाता है आपके जो है वो used to convey an information signal from one or several sender to a several receivers. चैनल क्या है? चैनल एक लिंक है और वो क्यों यूज किया जाता है? किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ, कहाँ से? फ्रॉम वन ऑफ द सेवरल सेंडर टू द टू वन और सेवरल रिसीवर्स। सो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो लिंक क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द चैनल। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एक्सपेंसिव होती हैं। सो ग्रेटर जितनी जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी जो है वो कॉस्ट ग्रेटर होगी। सो ऑल ट्रांसमिशन चैनल्स आर ऑफ लिमिटेड बैंडविड्थ। सो मेक एज एफिशिएंट यूज पॉसिबल ऑफ अ गिवन बैंडविड्थ। आपका जो पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर लिमिट ऑफ एरर रेट क्या होता है कि रेट एट विच एरर अकर्स। सो फॉर अ गिवन बैंडविड्थ गेट अ हाई डेटा रेट एज पॉसिबल। So error is the reception of 1 when 0 was transmitted and reception of 0 when 1 was transmitted. यानी कि हमने जो bits भेजी हैं अगर वो 0 1 1 1 1 है तो it might be possible कि जो 0 हैं वो 1s में change हो जाएंगे और जो 1s हैं वो 0s में जब change हो जाएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? Error कहलाएगा। This is end of our today's lecture. Student, what we have studied today? We have studied that what is a bandwidth, what is the highest frequency and the lowest frequency, that is called a bandwidth, and we have also discussed that transmission impairments. After that, we have seen that what is a channel capacity, and in the next lecture, we will continue our lecture from where we have left off. Students, if you don't value your time, neither will others. So stop giving away your time and talents. Start charging for it. Thank you very much. Allah Hafiz.